A very good morning. So today we are going to discuss about a new lesson, a new chapter, that is the optics. So before we are going to start the optics, we must know about something about the light. We must know some basic things. So in this lecture we are going to see some basic things related to the light. Okay. So today we are going to start the optics chapter. Optics means it is one of the branch of physics in which we are going to study the various optical instrument, in which we are going to study the light also. Okay, so that things it is known as the optics. Now see here, before we are going to start the optics, we must know something about the light. So as we know the light, so we can see the various things around us. That is because of the light. We can see the various phenomena like the sunrise, sunset. So all these phenomena we can able to see because of the light. Now see here, suppose you are in any room and a complete darkness is there. Okay. So as we know that we can see the object with the help of our eyes. But eyes are the sense organ which gives the sense of sight to us. But eyes are not sufficient. We require light also. Suppose if you are in any room and that complete darkness in that room, though you have the eyes, then also you are unable to see anything in that room. Okay, so means light plays a very important role. Suppose if you on the torch in the same room, then you can see everything in that room. Means because of the presence of light, you can see everything. So we can see the various things in around us because of the presence of light is there. Like we can see the various phenomena like sunset, sunrise, rainbow in the sky. So all these phenomena we can able to see due to the light. Okay. So now see here, before we are going to discuss about the light in details, so you must know about the nature of light. So now to explain the nature of light, there were two theories were given. So one is the wave theory of light. One is the wave theory of light. And another is the particle theory of light. So as you know that, आपको पता है, as you know that, because light. So you also already learn in your lower classes. You may learn in 8, 9, and 10 about the light. So light has a dual nature. One is the wave nature, and another is the particle nature. So wave nature means, see here, so light is travels in the form of waves, electromagnetic waves, and these waves travels with a very high speed. Okay, and particle nature means the light consists of a very small tiny particles. Okay, and the basic entity of this tiny particle is known as the photon. Photon is nothing but it is the bundle of packets of energy. Okay. So means why there is a dual nature of light is there. It is practically proven also. So because light has a dual nature, if you are going to explain some phenomena like a superposition of light, so at that time we have to consider the wave nature of light. If you are going to explain the phenomena like a reflection, refraction, so all these phenomena if you are going to explain at that time we have to consider the another nature of light, that is the particle nature of light. So light has a dual nature, you know it. Okay. Then you know about the some object, like some object they are emitting their own light. So these objects are known as the luminous objects, and some objects they are not emitting their own light. These objects are called as the non-luminous. Non-luminous object मतलब क्या होता है, जो object they are not emitting their own light, and luminous object means these are the objects they are emitting their own light. So such objects are known as the luminous object. Means for example, sun. Sun is the one of the natural source of light. Okay, so from the sun we are getting light energy as well as heat energy. Okay, so sun is the luminous object. Means sun can produce its own light. Is for example tube light at your home or any light, LED bulb at your home. It emits its own light. It means that it emits its own light. मतलब वो खुद का light emit करता है. जैसे candle. When you burn the candle is emitting its own light. So that is known as the luminous object. तो उसे हम क्या कहते हैं? Luminous object कहते हैं. And non-luminous object means those objects they are not emitting their own light. They are called as the
non-luminous objects. Okay, so this is about the luminous and non-luminous. Now before we are going to start about the light, nature of light, as you understand there are two natures, dual nature. Light has a dual nature, wave nature and particle nature. Now then we discuss about the various phenomena like a reflection of light. Okay, so before that we are going to discuss about the properties of light. So light के कुछ properties देखेंगे पहले. Properties of light. Properties of light. So as you already learned these things, but before we are going to start the optics, you must know all these basic things. That's why I am going to revise all these things. Okay. So properties of light, as we know that the light is travels with a very high speed. Okay. So the speed of light is, it travels with the speed of light का speed कितना रहता है? It is divided by letter C, 3 into 10⁸ meter per second या फिर 3 lakh kilometer per second. That much is the speed of light. Means the light can travel with this much speed कि it can travel 8 times around the earth. इसका speed इतना बड़ा है कि 1 सेकंड में वो 8 बार पूरे वर्ल्ड को घूम के आ सकता है. Okay, so that much is the speed of light. And the light is travels along the straight line path. The light is always travels. Suppose we are receiving the light from the sun. So whatever be the light is traveling from the sun, that light rays, they are traveling along the straight line. They are reaching towards the earth along the straight line path. And that property of light is known as the rectilinear propagation of light. तो उसी property को हम क्या कहते हैं? Rectilinear propagation of light कहते हैं. तो light travels along the straight line path. Light कैसे travel करता है हमेशा? It travels along straight line path, and that property of light को क्या कहते हैं हम? Rectilinear propagation. Rectilinear propagation कहते हैं हम उसे. That is called as the rectilinear propagation of light. Okay, is it clear? Okay. So this is about the properties of light. ये हो गया properties of light के बारे में. Now we are going to discuss about the some properties of light like a reflection of light. First we are going to discuss about the reflection of light. So now see here, these things are very much important to understand the optics. Okay. So अब देखो यहाँ पे properties of light, पहले हम देखेंगे reflection of light means what. Reflection of light. Now see here, अब यहाँ पे देखो, as we know that when the light is falls on any surface, then there are 3 possibilities are there. So light may be reflected. एक तो light वहाँ से reflect हो जाएगा. Reflection मतलब क्या मैं बताता हूँ आपको. Then some light may be absorbed. Okay, and some light may be transmit or pass through the given object. So any surface is there, so through that, suppose if you are allowed to fall some light on that surface, there are 3 possibilities are there. Either that light may be, some light may be reflected, some light may be absorbed, or some light may be transmitted through the given object. Okay, जैसे हमने ऑलरेडी अपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि 8, 9, 10 में आपने पढ़ा होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस ऐसे 3 प्रकार के मटेरियल्स रहते हैं. ट्रांसपेरेंट मटेरियल, ट्रांसलूसेंट मटेरियल एंड ओपेक मटेरियल. ट्रांसपेरेंट मटेरियल मतलब क्या होता है कि जिस मटेरियल में से द मटेरियल थ्रू विच अ लाइट कैन बी पास, मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट कैन बी पास, सच अ मटेरियल और सच अ सब्सटेंसेस आर नोन एज द ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस. ओके, एंड ट्रांसलूसेंट मींस दीज आर द सब्सटेंसेस. ट्रांसलूसेंट मतलब क्या होता है कि जिस सब्सटेंस में से लाइट, सम लाइट में भी सम लाइट क्या होता है उसमें से ट्रांसमिट होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल हम एयर में से पूरा का पूरा लाइट ट्रांसफर होता है. वाटर कंप्लीट मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट विल बी पास थ्रू द गिवन मटेरियल. देन ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसमें से मैक्सिमम लाइट पास होता है. दैट इज द एग्जांपल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल. एंड इन केस ऑफ ट्रांसलूसेंट मटेरियल मींस व्हाट, these are the material in which some amount of light will be transmitted, like a trace paper, butter paper. उसमें क्या होता है, कुछ amount of light transmit होता है और कुछ amount of light absorb हो सकता है और reflect हो सकता है. Okay,
and opaque object means here. Now the third is the opaque. Opaque means उसमें से when we allow to fall the light on the given surface, then maximum amount of light will be reflected back. और उसमें से light pass नहीं होता है. Such objects are called the opaque object. जैसे अभी ये wall है, समझिए बोर्ड है, इसके ऊपर मैं टॉर्च बोर्ड करके रख रहा हूँ, तो इसमें से टॉर्च में से लाइट पास हो जाएगी क्या उधर? इस बोर्ड में से लाइट उधर पास होगा क्या? पीछे जाएगा क्या? नहीं जाएगा. तो बोर्ड क्या होगा? मेरा opaque ऑब्जेक्ट होगा. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है. ओके, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या होता है ये देखना है हमें. व्हाट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब देखो यहाँ पे, अब हमने कोई भी एक प्लेन पॉलिश मिरर लिया, हमने प्लेन पॉलिश, हाईली पॉलिश सरफेस. ओके, हाईली पॉलिश ओपेक सरफेस. ये हाईली पॉलिश मिरर है और ओपेक है, मतलब इसमें से लाइट ना ट्रांसमिट होगा क्या? नहीं होता है. ओके, सो नाउ दिस इज आवर नॉर्मल. ये हमारा नॉर्मल है. अब मैं क्या कर रहा हूँ, व्हेन आई इंसिडेंट अ लाइट रे, okay, this point is called as the point of incidence O, and this ray is called as the incident ray. इस रे को हम क्या कहेंगे? This ray is known as the incident ray. When the light is incident on this plane polished mirror, इस मिरर पे ऊपर हम जब लाइट इंसिडेंट करेंगे, then this light ray will be bounce back as we know that. आपको पता है कि light always travels along the straight line path. तो यहाँ पर देखो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल कर रहा है. ओके, सो बट अब ये तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट में से लाइट ट्रांसमिट हो गया क्या? नहीं होगा. पास होगा क्या? नहीं. सो व्हाट विल हैपन हियर? दिस लाइट रे विल बी बाउंस बैक एंड इट विल बी चेंज इट्स डायरेक्शन इनटू द सेम मीडियम. अब ऊपर कौन सा मीडियम है? सपोज यहाँ पे एयर मीडियम. ओके, एयर मीडियम में से मैंने लाइट इंसिडेंट किया है एंड दैट लाइट रे विल बी बाउंस बैक इनटू दिस सेम मीडियम. तो उसी मीडियम में ये लाइट रे क्या हो रहा है? बाउंस बैक हो रहा है. तो उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज द, दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और ये जो एंगल रहेगा ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टेड रे. दिस रे इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे. ओके, अब ये जो हमारा एंगल रहेगा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल. इंसिडेंट रे और नॉर्मल में जो भी एंगल बनता है, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे मतलब समझ में आया है. रिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया? When a light ray is incident on any plane polished surface which is opaque surface, then the light ray will be bounced back into the same medium and changes its direction. अब इसका डायरेक्शन इनिशियली ऐसे था, यहाँ पे क्या होगा? लाइट रे उसी मीडियम में वापस चला गया. The light ray is bounced back into the same medium and it changes its direction. So that property of light is known as the reflection of light. तो रिफ्लेक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? When a light is incident on plane polished opaque surface, then it bounces back into the same medium and changes its direction. So that property of light is known as reflection of light. तो उस property को हम क्या कहेंगे? That property is known as the reflection of light कहेंगे. Okay? Now the next is, there are certain laws of reflections are there. This is known as the incident ray, this is known as the reflected ray, and this is known as the normal. अब laws क्या है? Reflection के laws क्या है? So what are the laws of reflection? Laws of reflection. तो reflection के हम laws study करेंगे अब. Laws of reflection. तो इसका पहला law है कि हमारा जो incident ray है, हमारा इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है, इसमें जो एंगल बनता है, दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस. अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन करना है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड दिस नॉर्मल, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड द एंगल बिटवीन दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस नॉर्मल, दैट एंगल इज नोन एज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ओके, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखना है हमें. तो पहला लॉ क्या है हमारा? आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई
इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर। मतलब जितने एंगल से हम लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं, सपोज आई एम इंसिडेंटिंग अ लाइट रे एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, 20 डिग्री से लाइट रे इंसिडेंट किया तो रिफ्लेक्शन कितने होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में कितना रहेगा 20 डिग्री। ओके, मतलब एंगल ऑफ जितने एंगल से हम लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं उतने ही एंगल से क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। बट दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए, मतलब जहां पे हमारा सरफेस कैसा है, आवर सरफेस इज अ प्लेन पॉलिश सरफेस, प्लेन सरफेस है और पॉलिश हाईली पॉलिश सरफेस है। अगर समझ ऐसे रफ सरफेस रहेगा, डल सरफेस, जिसके ऊपर आप लाइट का अगर इंसिडेंट करोगे तो यहाँ पे ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होंगे क्या, नहीं, तो उसे कहते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, व्हिच इज कॉल्ड एज इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसे हम इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और जहाँ पे लाइट हमारा रिफ्लेक्ट होता है तो उसे कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या फिर सिंपली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, बराबर है। और सेकंड लॉ क्या है, जो हमारा इंसिडेंट रे है, हमारा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। जो भी हमारा इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल है, ये सभी हमारे कहाँ पे रहते हैं, लाइज इन एक ही प्लेन में रहते हैं। सो दैट इज नोन एज दी सेकंड लॉ। ओके, मतलब ये इंसिडेंट रे हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया। सो ऑल दिस थ्री रेज आर लाइज इन द सेम प्लेन। ओके, ओके, सो ऑल दिस थ्री रेज आर कॉल्ड एज दी ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। सो ऑल दिस थ्री रेज लाइज इन द सेम प्लेन। और तीसरा लॉ आप बना सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे नॉर्मल के दोनों अपोजिट साइड में है। रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे बोथ आर लाइज ऑन द अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल। सो दिस इज अबाउट द एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ क्या है, फर्स्ट लॉ इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, मींस सपोज इफ यू आर गोइंग टू इंसिडेंट अ लाइट रे which is suppose if you are incidenting a light ray at a degree of 20 degree, 20 डिग्री से इंसिडेंट किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 20 रहेगा। 30 से इंसिडेंट किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 रहेगा। 40 से किया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 रहेगा। 50, 60, मतलब जितना आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, सो नाउ सी हियर, अब यहाँ पे देखो, सपोज आई इंसिडेंट अ लाइट परपेंडिकुलर, मतलब मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ऐसे लाइट रे में इंसिडेंट करो, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है यहाँ पे, तो लाइट रे रिफ्लेक्ट भी कैसे होगा, अलोंग द सेम पाथ, इसी पाथ से ऐसा रिफ्लेक्ट होगा। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। सो दिस इज अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, और ये हो गए उसके लॉज। दिस इज अबाउट द रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। ओके, अब हमें देखना है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ द इमेज इज फॉर्म इन प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनता है, ये हमें ये चीजें अब हमें देखनी है। हाउ द इमेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये देखेंगे आप। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको समझ में आया है। अब जो प्लेन मिरर रहता है, मींस द मिरर व्हिच आर यूजिंग एट आवर होम, जो आप आपके घर पे यूज करते हो। ओके, अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन यू टेक द बाथ, वी आर while combing our hair, we stand in front of the mirror. So in that mirror we can see our image. So how the image is formed in a plane mirror? Plane mirror में image कैसे बनता है and what are its characteristics? उसकी characteristics क्या है? So all these things we are going to discuss now. And these things are important because आपको ऑप्टिक्स में समझने में नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ हमें, सभी लेंसेज के बारे में सभी चीज़ें हमें यहाँ पे आपको अभी भी पता है, तो अभी आगे प्रॉब्लम नहीं जाए। ओके, तो अब हम देखेंगे प्लेन मिरर के बारे में। जैसे आप व्हेन यू टेक योर बाथ, यू आर combing your hair early in the morning in front of the plane mirror, you can see your image clearly in that plane mirror. Okay, so how your image is formed? तो वहाँ पे भी actually what happens, there will be also reflection of light is takes place,
So now see here, suppose this is consider any plane mirror. एक मैंने प्लेन मिरर कंसीडर किया है, प्लेन ऑफ एन मिरर, एंड इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, सपोज मैं अभी कोई भी पॉइंट सोर्स या फिर एक आधा कोई भी सोर्स लेता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे पेंसिल कंसीडर किया, दिस इज माय पेंसिल, ओके। अब ये पेंसिल इसके ऊपर A to Z ऐसे नंबर ऑफ पॉइंट्स है। अब आपको पता है वी कैन एबल टू सी द थिंग्स, व्हाई आई एम एबल टू सी द थिंग्स, बिकॉज ऑफ द लाइट। अब यहाँ पे ये चेयर है, so how I can identify this is a chair? Because whatever be the light which is falls on that chair, that light gets reflected back into my eyes and my optic nerves. आपको पता है as in our eyes optic nerves are there. So these optic nerves send that signal to our brain and then our brain recognize no it is a chair. आप चेयर को टेबल या टेबल को चेयर कभी बोलते हैं क्या? नहीं। Suppose table is there. So whatever why we can identify, मतलब जो भी चीज आप देखते हो, you never say मैन को हम वुमेन नहीं कहते, क्योंकि वहाँ उनकी बॉडी के ऊपर जो भी लाइट रे फॉल होता है that will be enter in our eyes and our eyes through the optic nerves that signal go to our brain, then we can easily identify it is a man, boy, it is a girl, it is a chair, it is a table, whatever be the things, okay. So and how this image is formed in a plane mirror, that's we are going to discuss here, okay. So it is made up of the number of, अब यहाँ पे इसके ऊपर number of light rays will be, इसके हर समझ इसके A to Z पॉइंट से बनाई है, number of light rays will be falls on it. So we consider here 2 light rays. We require at least 2 light rays for the formation of image. तो उसके पहले हम what is meant by real image, virtual image मतलब क्या होता है ये थोड़ा बता देता हूँ. So real image means what? The image which can be obtained on a screen. जो इमेज हमको स्क्रीन के ऊपर मिलता है, the image which can be formed on a screen or which can be obtained on a screen, that image is known as the real image. Real image means, see here, real image means what? Real image means जो इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर मिलता है, image which obtained on screen, that image is called as the real image. And virtual image means cannot obtain on a screen. Image which cannot be obtained on a screen, such a image is known as the virtual image. Okay? तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा। आपको समझिए मेरा पेंसिल है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, मैंने जस्ट पेंसिल लिया, कुछ भी ले सकते हो, आप भी खड़े हो सपोज वहाँ उसके सामने, तो आपकी बॉडी के ऊपर हर एक पार्ट के ऊपर आपकी बॉडी के ऊपर लाइट रे फॉल होंगे। ओके, वी कंसीडर ओनली 2 लाइट रेज। समझिए यहाँ से एक लाइट रे फॉल हो गया, ओके। अब आपको पता है लाइट रे ऐसे फॉल होने के बाद समझिए कितने एंगल से जो भी फॉल होगा उतने एंगल से क्या हो जाएगा, ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। और यहाँ से समझिए दूसरा लाइट रे हमने ऐसे फॉल कर दिया, यहाँ से हम दूसरे पॉइंट से दूसरा लाइट रे गया, ये उतने एंगल से क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। मतलब जितने एंगल से इंसिडेंट होगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी से। अगर इस लाइट रेज को हम पीछे एक्सटेंड करेंगे, समझिए यहाँ पे पॉइंट है हमारा ये P और यहाँ पे पॉइंट Q है, ओके। तो ऐसे पीछे एक्सटेंड अगर मैं जब करूँगा इसको, दोनों रेज को, when I extend these light rays in backward, पीछे एक्सटेंड करूंगा मैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये मीट हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉइंट P का इमेज मिलेगा, ओके। और ऐसे यहाँ पे हर एक लाइट रे से ऐसे रेज निकाल के हमें क्या मिल जाएगा, सिमिलरली वी आर गेटिंग द इमेज ऑफ, यहाँ पे पॉइंट P का मिला, वैसे हमें यहाँ पे हर एक पॉइंट का अगर ज्वाइन करेंगे हम, यहाँ से एक रे निकलेगा तो हमें क्यूब का भी इमेज मिलेगा, ओके। थोड़ा मैंने नियर प्रोग्राम में थोड़ा, ओके, तो समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि देखो यहाँ पे, अब इसमें प्लेन मिरर में ऐसा हमें इमेज मिलता है, सीधा इमेज मिलता है, ओके। तो इसके अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है हमें, प्लेन मिरर में जो भी हमें इमेज मिलता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये ऐसे इमेज फॉर्मेशन होता है। मतलब इमेज फॉर्मेशन होने के लिए यहाँ पे इसमें से आपको इतना ही मैं बताना चाहता हूँ कि
कोई इमेज बनता है मतलब वहां पे क्या होता है, दिस लाइट रे आर एक्चुअली मीट और दे अपीयर्स टू बी मीट। एक्चुअली मीट अगर हो रहे हैं तो वहां पे रियल इमेज फॉर्म होगा, और अपीयर्स टू बी मीट हो रहे हैं तो वहां पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा। ओके, अगर वो एक्चुअली मीट हो रहे हैं तो वहां पे रियल इमेज मिलेगा, और अपीयर्स टू बी मीट अगर हो रहे हैं तो वहां पे हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा। ओके, तो इतना तो आया होगा समझ में। अब देखना है हमें, अब ये जो हमारा मिरर है, प्लेन मिरर, तो इस प्लेन मिरर में जो भी इमेज हमें मिलता है, तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज हमें मिल रहा है वो इमेज हमारा, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो कभी आपने देखा होगा आपका सर नीचे और पैर ऊपर ऐसा दिखता है क्या? नहीं, कि आप मोटे दिखते हो या फिर पतले दिखते हो, मीन्स यू कैन सी यू एज इट इज यू आर। ओके, मीन्स द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के अंदर जो भी इमेज फॉर्म होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर। ये चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी है, यू ऑलरेडी लर्न दिस थिंग्स, बट जस्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वेरियस ऑप्टिक्स। मैं ये समझने के लिए आपको जरूरी है। सो नाउ सी हियर, अ प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है वो रियल बनता है या वर्चुअल बनता है, ये हम देखेंगे। तो इसमें जो भी इमेज मिलता है इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज का साइज क्या रहता है? सेम एज ऑब्जेक्ट। मतलब प्लेन मिरर के सामने जब आप घर पे खड़े रहते हो, व्हेन यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, सो यू लुक एज इट इज यू आर इन योर इमेज आल्सो। जैसे आपको वैसे आपके इमेज में आप दिखते हो, मींस व्हाटएवर बी द ऑब्जेक्ट इज देयर, इफ यू प्लेस दिस मार्कर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, इट विल अपीयर सेम दिखेगा। ओके, सो इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ना वो बड़ा दिखता है ना छोटा दिखता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही हमें दिखता है। इट इज ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सेकंड थिंग, suppose if you are standing, suppose at your home, if you are standing, suppose this is the plane mirror. Okay, plane mirror से आप suppose if you are standing 2 feet, थोड़ा 2 feet आप ऐसे दूर खड़े हो। ओके, सो जो भी आपका इमेज यहाँ पे मिलेगा आपको, so that image will be appears at the same distance। वो भी इमेज आपको कितने डिस्टेंस में मिलेगा? इधर मिरर के पीछे 2 feet डिस्टेंस पे ही मिलेगा। मतलब जैसे इसके लिए मैं आपको एक बताता हूँ, जैसे आपने एक चेस बोर्ड लिया है, यहाँ एक चेस बोर्ड है हमारे पास, ऐसा चेस बोर्ड है, और यहाँ पे हमने प्लेन मिरर रखा है मैंने। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखता हूँ, जैसे इरेजर या फिर पेंसिल, चेस बोर्ड के ये पहले बॉक्स पे रहता हूँ, पहले बॉक्स के बाउंड्री पे, तो मुझे इमेज में भी वहां पे आई विल ऑब्जर्व द इमेज ऑफ दैट इरेजर और दैट शार्पनर इन द प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ, मतलब एक बॉक्स के एट द वन बॉक्स के, मतलब इतना यहाँ पे मैंने पहले बॉक्स के कॉर्नर पे रखा है, तो उसके इमेज में भी मुझे वहीं पे दिखेगा वो। मैंने अगर सेकंड बॉक्स के बाउंड्री पे रखा है, सपोज इसका पोजीशन चेंज किया, यहाँ पे रखा, तो मुझे इमेज में भी सेकंड बॉक्स के बाउंड्री पे दिखेगा। ओके, मैंने यहाँ पे अगर इसको यहाँ पे रखा है, मुझे इमेज में भी तीसरे चेक्स का जो बोर्ड है हमारे, उसके तीसरे बॉक्स के बाउंड्री के ऊपर दिखेगा। ओके, मतलब द इमेज जो भी मिलता है इट इज एट द सेम डिस्टेंस। जितने दूर हमने मिरर से ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उतने ही दूर इमेज उसकी मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस में हमें मिलेगी। मींस इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आर इक्वल हियर। इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज का डिस्टेंस इक्वल टू हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। ओके, सो दिस इज अबाउट द इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये हो गया इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स। देन थर्ड, अब इसके अंदर जो भी इमेज मिल रहा है हमें, दैट इमेज इज द वर्चुअल इमेज। मैंने अभी लिख के दिया था आपको वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है, अभी बताया था। वर्चुअल इमेज मिलता है इसमें, वर्चुअल इमेज एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधा,
जैसे आप प्लेन, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, योर हेड अपीयर्स एट द टॉप, इट इज नेवर, आपको कभी ऐसा उल्टा नहीं दिखता कि पैर ऊपर दिख रहे हैं मिरर के सामने, नहीं, इरेक्ट मींस अप साइड, ओके, एंड इन्वर्टेड मींस डाउन साइड, उल्टा, इन्वर्टेड मतलब तो उल्टा दिखता है, देखिएगा जैसे ये मार्कर है मेरे पास, मैं अगर इसको प्लेन मिरर के सामने होल्ड करके रखता हूँ तो ये मार्कर का क्या है, टॉप में ऊपर है, तो मुझे इमेज में भी सेम पोजीशन पे मिलेगा, ऐसा नीचे नहीं मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। सो इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड वर्चुअल मींस व्हाट, इट इज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, द इमेज फॉर्म इन द प्लेन मिरर इट इज नॉट ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, दैट इमेज इज नोन एज द वर्चुअल इमेज। उस इमेज को क्या कहेंगे हम, that image is known as virtual image। मैं suppose if you are standing in front of the plane mirror and this is a plane mirror, अगर आप 2 फीट plane mirror के सामने खड़े हो, okay, so if you place the screen between you and the plane mirror, does it is possible your image will be appear on the screen? अगर आप plane mirror और भाई plane mirror के सामने खड़े हो, अब plane mirror और आपके बीच में अगर मैंने screen रख दिया तो आपका इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। सपोज आपने मिरर के पीछे स्क्रीन रख दिया, देन also you are not getting your image on the screen, okay, so this image formed in a plane mirror is known as the virtual image। प्लेन मिरर में कौन सा इमेज मिलता है हमें, we are getting the virtual image in the plane mirror, okay, so the image formed in a plane mirror it is a virtual one and it is the erect one, okay, तो यहाँ पे प्लेन मिरर में जो भी इमेज बनता है ये वर्चुअल इमेज मिलेगा आपको और इरेक्ट इमेज मिलेगा। इज इट क्लियर, ओके, तो ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक लास्ट का इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो प्लेन मिरर में जो इमेज मिलता है वो हमें मिलेगा लैटरली inverted। अब laterally inverted means what? Suppose if you are standing in front of the plane mirror and you are raising your right hand, then you can observe in your image it appears to be a left one। अगर आप plane mirror के सामने खड़े हो, अगर आपने आपका लेफ्ट हैंड ऊपर किया या फिर if you touch your right shoulder, then in your image, तब आपको इमेज में क्या दिखेगा, you are touching your left shoulder। If you are raising your right hand in your image, you see that it appears to be a left one। मतलब आप अगर राइट हैंड ऊपर करते हो तो आपके इमेज में क्या दिखेगा आपको, ये लेफ्ट appears, ये लेफ्ट appear होगा। लेफ्ट ऊपर करोगे तो इमेज में राइट दिखेगा। मीन्स लैटरल इन्वर्शन प्रॉपर्टी, इन्वर्टेड प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी है कि जिसमें हमें लेफ्ट appears राइट एंड राइट appears लेफ्ट। तो लैटरली इन्वर्टेड मिलता है हमें, इमेज कैसे मिलेगा हमें, लैटरली इन्वर्टेड। अब यू कैन इजीली ऑब्जर्व जो एम्बुलेंस रहता है, तो एम्बुलेंस में क्या रहता है, वो नाम कैसे लिखा रहता है, इन अ वेरी डिफरेंट मैनर, क्योंकि वो इमेज जो सामने वाला जो ड्राइवर है जब वो उसके रियर ग्लास में देखेगा तब उसको वो इमेज सीधा दिखना चाहिए करके उसको ऐसे लिखते हैं, वो आपने पढ़ा होगा, आपको पता है। तो लैटरली इन्वर्टेड मतलब लेफ्ट appears राइट एंड राइट appears लेफ्ट। तो प्लेन मिरर में जो भी इमेज मिलता है वो कैसे रहता है, इट इज अ लैटरली इन्वर्टेड इमेज, ओके। सो दिस इज अबाउट द प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। प्लेन मिरर में जो भी हमें इमेज मिलता है उसका साइज क्या रहता है, सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देन सेकंड थिंग, प्लेन मिरर में हमें जो भी इमेज मिलता है उसका डिस्टेंस इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और प्लेन मिरर में जो इमेज हमें मिल रहा है दैट इज द वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज मतलब द इमेज which cannot be obtained on a screen, that image is known as the virtual image, okay। And erect one means upside, okay, and laterally inverted means it is a property in which in a plane mirror left appears right and right appears left, it is laterally inverted, okay। So that property is known as the lateral inversion, okay। तो image जो plane mirror में फॉर्म होता है तो इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, एक तो वो सेम साइज का रहता है ऑब्जेक्ट के, इमेज का डिस्टेंस जितने दूर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे मिरर के अंदर उतने ही दूर हमें इमेज दिखेगी। वर्चुअल रहता है जो स्क्रीन पे नहीं मिलता है, इरेक्ट रहता है सीधा का सीधा मिलता है, लैटरली इन्वर्टेड मिलता है, ओके। तो दैट इज नोन एज द, तो इसे हम कहते हैं
So that is called as the lateral illumination, or these are the characteristics of image formed in a plane mirror. तो ये plane mirror में जो image बना है उसके ये characteristics है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट द प्लेन मिरर. नाउ अब हमें देखना है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर के बारे में भी आपने पढ़ा होगा. यू ऑलरेडी लर्न ऑल दिस थिंग्स इन 8, 9, 10. ओके, तो ये प्लेन मिरर का हो गया. अब हमें देखना है स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होता है. जैसे आपने को पता है, एज यू नो दैट स्फेरिकल मिरर मींस व्हाट. स्फेरिकल मिरर मतलब क्या होता है. जैसे आपने पता है ये स्फेरिकल एक मिरर है, हाईली स्फेरिकल मिरर. इसको अगर मैं कट कर देता हूँ, ओके, जैसे हमारे पास एक ऐसा बॉल है, इस बॉल को अगर हम कट कर देते हैं तो हमें दो टाइप के सरफेसेस मिलता है. एक आधा सरफेस कर्व इनवर्ड रहता है और एक कर्व आउटवर्ड रहता है ना. तो वैसे ही ये हमारा एक ऐसा स्फेरिकल ग्लास है, हाईली पॉलिश्ड स्फेरिकल ग्लास है. उसको मैंने अगर कट कर दिया तो हमें क्या मिलता है. वी आर गेटिंग द टू मिरर्स. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स आर देयर. स्फेरिकल मिरर्स के कितने टाइप है. There are two types of spherical mirror. One is the concave mirror. Second one is the convex mirror. Concave mirror and convex mirror. There are two types of spherical mirrors are there. Concave mirror and convex mirror. So concave mirror and convex mirror means what that we are going to discuss here. अब ये ऐसा मैंने बताया आपको, आपके पास ऐसा एक बॉल है, उस बॉल को आप कट कर देते हो. ओके, तो you are getting the two types of surfaces, concave and convex. Okay, तो दो concave mirror मतलब क्या होता है ये मैं पहले बता देता हूँ. concave mirror, अब concave mirror मतलब क्या होता है. the mirror whose reflecting surface is curved concave. ऐसा mirror या फिर curved inward जिसका reflecting surface क्या है, curved inward है. The mirror having a reflecting surface is curved inward. Such a mirror is called as concave mirror. ये मेरा concave mirror है जिसका reflecting surface क्या है, curved inward है. ये है इसका reflecting surface. reflecting surface, और ये reflecting surface कैसा है, curved inward. I will bulging inward. Okay, so the curves, okay, curved inward. इसका reflecting surface क्या है, curved inward. So such a mirror having a reflecting surface which is curved inward, that mirror is known as the concave mirror. उस mirror को हम concave mirror कहते हैं. तो spherical mirror के दो types है. concave mirror मतलब क्या होता है, the mirror having reflecting surface is curved inward, that mirror is known as the concave mirror. And what is the convex one? The mirror having reflecting surface is curved outward. Okay, जो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड आउटवर्ड है, दैट मिरर इज नोन एज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर. ये स्फेरिकल मिरर के दो टाइप्स हैं. जो मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, कर्व्ड इनवर्ड है, तो इस मिरर को हम क्या कहेंगे, दैट मिरर इज कॉल्ड एज दी, उस मिरर को कहेंगे हम concave mirror. And the mirror having reflecting surface is curved outward, that mirror is known as the convex mirror. उस mirror को हम convex mirror कहते हैं. Is it clear? Okay, तो curved inward जिसका reflecting surface है उसे कहेंगे concave mirror. The mirror having reflecting surface is curved outward, which is known as the convex one. Okay, अब now related to this spherical mirror we are going to understand some terminologies. अब इसमें इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है, हाउ द इमेज इज फॉर्म, हाउ द इमेज इज फॉर्म इन concave mirror, what are its characteristics, where the concave mirrors are used, where the convex mirrors are used, how the image is formed in the concave mirror, convex mirror. So all these things we are going to discuss in details in the next video.
ओके, सो दिस इज अबाउट द स्फेरिकल मिरर। मीन्स स्फेरिकल मिरर के दो प्रकार है, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर मतलब क्या होता है कि जिस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या रहता है, कर्व इनवर्ड रहता है, उसे बोलते हैं कॉन्केव मिरर। एंड मिरर हैविंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व आउटवर्ड, उसे कहेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर। ओके, तो दिस इज अबाउट द spherical mirror, and in the next lecture we are going to discuss some terminologies related to the spherical mirror। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल ऑफ द मिरर मतलब क्या होता है, बाद में फोकस मतलब क्या होता है, फोकल लेंथ क्या है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे, मिरर फार्मूला। सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू वेरी मच।